Hello, my dear students, and welcome to my YouTube channel named Imavate Academy. My name is Sunandu Devnath. In this video, I will be discussing about a very important ICSE question that came in the year 2007 in the board examination. The program was on switch case. Let us understand the question. Using a switch case statement, write a menu-driven program to convert a given temperature to Fahrenheit to Celsius and vice versa. What is the meaning of this sentence? Now we have to use switch case statement to write a menu-driven program. So I had explained you all in the last video where I had explained the basics of switch case. That menu-driven program is basically a program which gives a list of options to the user. The user has to select one of the options, and then the necessary option which he has selected will be worked out. So here also we have to provide multiple options to the user. Now, what are the options? That the question has already mentioned. To convert a given temperature from Fahrenheit to Celsius means पहला मेनू का पहला ऑप्शन क्या होगा? Fahrenheit to Celsius में convert करना होगा. User will enter the temperature in Fahrenheit and the program will convert that Fahrenheit temperature into its corresponding Celsius temperature. And what will be the second option? लिखा हुआ है and vice versa. मतलब vice versa मतलब उल्टा. उल्टा क्या? डिग्री सेल्सियस में इनपुट होगा, यूजर इनपुट करेगा and the program will convert it to its corresponding Fahrenheit temperature. So you have two options to the user. आप बता दोगे कंप्यूटर will tell the user कि ये आपके दो ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1 ये है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन 1 को आप एंटर कीजिए. अगर आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 को एंटर कीजिए. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फॉर एन इनकरेक्ट चॉइस मींस इफ द यूजर इनपुट्स एन इनकरेक्ट चॉइस मींस नॉट 1 एंड नॉट इवन 2, कोई दूसरा नंबर मे बी 3 4 5 6 which is not present in the option list, which is not present in the menu. So if he inputs any wrong choice, so for that an appropriate message also needs to be displayed. If you have watched my previous lecture, you will have no doubt in understanding that for an incorrect choice, which statement is used in the switch case. Yes, I know you all are saying together that is the default statement, isn't it? Default statement is used for this purpose. So all this thing, the role of default, the role of break statement, and all these things I have covered in the previous video of mine. Now, here, let us see how can we do. So I'm straight away taking you to my BlueJ screen where I have already written the program and I will explain you each and every step, each and every line of code of the program and how does it work. Before that, you can see they have also provided the formulas in the question paper itself. कि सेल्सियस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को तो मैं क्या करूंगा? C is equal to F by 9 into C is equal to 5 by 9 into F minus 32. ये दिया हुआ है. और अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को तो मैं क्या करूंगा? इस फॉर्मूला को यूज करूंगा. F is equal to 1.8 into the corresponding Celsius temperature plus 32. तो हमें फॉर्मूलाज का भी टेंशन नहीं है कि कैसे कन्वर्ट होगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. चलो, I'm straight away taking you to the BlueJ software now. So now you should be able to see my BlueJ home screen, and this is the class which I have already created, the program which I've already written. The name of the class is temperature, and I will open the editor. I have already written the program. I will explain you the codes, each and every line of code. So now look at the screen and try to understand. Since we need to enter from the user, we have to enter 3 things. Okay, in fact, in one attempt, we have to input 2 things. What are the things that we have to input? We have to input the option, the choice, that what is the choice of the user? कि आप
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना चाहते हैं? अगर आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना चाहते हैं तो 1 एंटर कीजिए, अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 एंटर कीजिए। मतलब यूजर से उसका चॉइस को मैं एंटर करूंगा, प्रोग्राम में सेव्ड हो जाएगा, तो वो उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए मुझे। So that is one thing that I have to enter from the user, that I have to input from the user. Another thing is that the temperature. If he wants to convert Fahrenheit to Celsius, then he will enter the temperature in Fahrenheit. So to store that Fahrenheit temperature, I need a variable. And otherwise, if he wants to enter a Celsius temperature and wants it to convert to Fahrenheit, then for that Fahrenheit temperature will be inputted. So at a time, either one of the options will be worked out. So at a time, 2 inputs are required. One, the choice, and second, the temperature. Now see, first of all, we have declared the import statement. I have imported the util package and the scanner class. We have to do it because it is an input wala program. Then public class temperature. I have created this class. The name of the class is temperature. So undoubtedly here also it shows that it is temperature. Look, so I have to use the same name, temperature. Now I have declared the main function over here. Now I have first thing, I have created the object of the scanner class, as we have done in all the previous programs wherever we have taken input. And then I have displayed on the output screen for the user to know that type 1, if you want to convert from Fahrenheit to Celsius. Type 2, if you want to convert from Celsius to Fahrenheit. So this message will be displayed on the output screen. The user will be able to see these 2 messages. इसको देखकर वो डिसाइड करेगा कि मैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस मुझे करना है कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट. So whatever he enters, 1 or 2, will be stored in a variable named choice. And उसका डेटा टाइप क्या है? int. तो मैंने int को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया int choice बोल के, और उसमें मैंने स्टोर कर दिया उसने जो भी नंबर को एंटर किया, 1 हो 2 हो, वो तो इंटीजर नंबर्स ही है, 1 2 आर इंटीजर्स ओनली. तो वो जो भी एंटर करेगा वो इस चॉइस नाम के वेरिएबल में एंटर हो जाएगा. sc.next int मैंने यूज कर दिया. ठीक है, दिस इज हाउ वी इनपुट. एंड देन आई हैव डिक्लेयर्ड 2 more variables of double data type, ft and ct. ft for storing the Fahrenheit temperature, means the temperature in degree Fahrenheit, and the ct for storing the temperature in degree Celsius. Okay, now what have I done? I have created the switch statement, the switch block. Switch ऐसे ही हम लोग create करते हैं, you know. Case 1 means we have to convert Fahrenheit to Celsius. So what is the temperature that we have to enter from the user? Fahrenheit वाला temperature. So case 1 में क्या लिखा हुआ है? system.out.print enter the temperature in Fahrenheit. आप Fahrenheit के temperature को input करो. So ft is that variable which we have created to store the Fahrenheit temperature. तो ft is equal to sc.next double. तो वो temperature जो user ने enter किया वो ft में चला गया. Now we have used this formula which was given in the question itself. ct is equal to f upon 9. You could have written 9.0 or 9. No problem. 9 भी लिखोगे तो कोई problem नहीं है. 9.0 भी लिखोगे कोई problem नहीं है. So 5 upon 9 into ft minus 32 means the Fahrenheit temperature minus 32. This is the formula which is given in the question itself. Now, अब ये convert हो गया Celsius में, CT में stored है. अब मैंने print कर दिया temperature in Celsius CT. इसके बाद केस 2 में हमें उल्टा काम करना है. एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, मुझे सेल्सियस में एंटर करना है. इन द सेम वे ct इज इक्वल टू sc.next double. वो ct वाला वेरिएबल में वो टेम्परेचर चला गया जो उसने सेल्सियस में एंटर किया था. फिर वो सेम फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है which converts Celsius to Fahrenheit, with that is written over here. And then this ft now stores the corresponding temperature in Fahrenheit. उसको प्रिंट कर दिया गया temperature in Fahrenheit. एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज किया गया कि अगर उसने एक गलत चॉइस इनपुट करे तो उसको मैसेज आ जाए इनकरेक्ट चॉइस. एंड इफ यू सी आई हैव यूज्ड ब्रेक स्टेटमेंट इन ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स. वैसे डिफॉल्ट में मुझे ब्रेक का यूज करने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. दिस इज नॉट
रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जनरली हम नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इधर करके रखा हुआ है, सेव कर दिया है, कोई बात नहीं है, रखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द प्रोग्राम, एंड इफ यू सी द प्रोग्राम एंड्स ओवर हियर, एंड दीज आर द क्लोजिंग ब्रेसेस व्हिच बैलेंस all the opening braces. Now I will run this program and I will show you how is it working. So मैंने देखो मैं compile को press कर रहा हूँ, and you see as I compiled it shows class compiled, no syntax errors. ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करूंगा and मैं अब जाऊंगा, इसको रन करूंगा, void main, and you can see the output screen coming up. अब क्या मांग रहा है? Type 1 to convert from Fahrenheit to Celsius, Type 2 to convert from Celsius to Fahrenheit. मैं अभी यूजर हूं, मुझे आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं 1 भी एंटर कर सकता हूं, 2 भी एंटर कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी जानबूझकर सबसे पहले गलत ऑप्शन को एंटर करता हूं। सपोज मैं 9 एंटर करता हूं, जो कि है ही नहीं यहाँ पे, तो इन दैट केस द डिफॉल्ट स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन इन द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। तो चलो मैं 9 को करता हूं, एंड देखोगे ऑप्शन आ गया इनकरेक्ट चॉइस, क्योंकि अभी डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, केस 1 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, केस 2 भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। I will once again run the program. Now I will enter 1 as the input. तो 1 अभी मैं एंटर करता हूं, एंड अब मुझसे क्या मांग रहा है? एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तुम लोग समझ रहे हो, अभी केस 1 में एंटर हो गया, केस 1 में यही ना स्टेटमेंट था सबसे पहले, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। वो केस 1 चल रहा है, केस 2 नहीं होगा, केस 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1 एंटर किया है। तो एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कोई भी टेम्परेचर 56 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो 56 एंटर कर दिया। टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट कर दिया, 13.33333334, ये हो गया काम। अब मैं 2 एंटर करके आपको दिखाता हूं, एंड इट विल अगेन वर्क इन द वेरी सिमिलर वे। बहुत सिंपल है, तुम लोग समझ गए हो। अब मैं 2 एंटर करता हूं, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, मुझसे भी सेल्सियस का टेम्परेचर मांग रहा है, क्योंकि अभी केस 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड हियर सपोज आई एंटर 67 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट कर दिया 152.600000002 जो भी है, सो वो अभी केस 2 एग्जीक्यूट हुआ, एंड इन दिस वे द स्विच केस वर्क्स। We will meet again in the next video very soon. Till then, keep practicing whatever we have covered in the previous videos. Uska practice karte raho. God bless everyone. Take care.